Hello everyone. So now we will be discussing about physiological changes in pregnancy. How to learn this topic in one go in few seconds. Let's discuss this. Before discussing, please like, share and subscribe my channel as it will help me a lot in my teaching journey. Okay, let's start it. First of all, here is hematological system. All the blood reports कैसे वो change होती हैं pregnancy के बीच में and how we have to interpret these blood report. Sometimes the reports are normal and we are thinking ki it is abnormal. Okay, so this slide is very important. In a short interval we will study how what are the changes in hematological system. So for the to understand the changes in hematological system, you have to just learn one word. And what is that word? You have to just learn one word, and that is, what is one word? That is, there is hemodilution. What do you understand by hemodilution? You all know that blood is made up of RBC and plasma, isn't it? Blood is made up of RBCs and plasma. ठीक है. So in pregnancy we both increases, RBCs also increase and plasma also increase. ओके जैसे हम घर पे खीर बनाते हैं, ठीक है, खीर में दूध होता है और चावल होते हैं, ठीक है, वैसे ही ब्लड में आरबीसीज होते हैं और प्लाज्मा होता है. सो liquid part is plasma and the solid part is the RBCs. ओके सो अब जब हम आरबीसीज प्रेगनेंसी में 20% ही इंक्रीज होते हैं और प्लाज्मा जो है वो 40% इंक्रीज होता है, ठीक है. अब एक खीर में हमने चावल तो थोड़े से बढ़ाए, ठीक है, 20% ही बढ़ाए, और हमने दूध ज़्यादा बढ़ा दिया तो खीर पतली हो जाएगी. In the same way, that will be known as खीर डाइल्यूशन. So this is hemodilution. ओके अब अगर आपको ये हीमोडाइल्यूशन समझ में आ गया ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हीमाटोलॉजिकल चेंजेस के बारे में. तो हमने सिर्फ हीमोडाइल्यूशन याद रखना है. दैट इज इंक्रीज इन द आरबीसी इज ओनली 20% एंड इंक्रीज इन द प्लाज्मा इज 40%, विच लीड्स टू थिन. विस्कोसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी ना. विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? गहरापन. विस्कोसिटी डिक्रीजेस. ओके सो नाउ एच बी मास क्या होता है? टोटल आरबीसीज इन ग्राम, सारे आरबीसीज इन ग्राम, ठीक है, तो वो तो इंक्रीज हो गए. एच बी मास होता है टोटल आरबीसीज का वेट इन ग्राम, तो वो तो इंक्रीज हुए ना. जैसे मैंने आपको खीर वाले एग्जांपल में बताया था कि दूध भी बढ़ा और चावल भी बढ़े, तो टोटल चावल तो इंक्रीज हो गए. बिल्कुल वैसे ही एच बी मास इंक्रीज हो जाएगा. अब हिमैटोक्रेट क्या होता है? हिमैटोक्रेट होता है आरबीसी वॉल्यूम अपॉन पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है. अब आरबीसी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, जस्ट इट इंक्रीजेज अ स्लाइट, एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम इट इंक्रीजेज अ लॉट. जब डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? हिमाटोक्रेट विल डिक्रीज. जब डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ता है तो वो उसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू वो कम हो जाती है. सो यहाँ पे हमें समझ में आया कि जो है हिमैटोक्रेट डिक्रीज, बिकॉज व्हाट इज हिमैटोक्रेट? हिमैटोक्रेट इज आरबीसी वॉल्यूम अपॉन पैक्ड सेल वॉल्यूम. ओके अब एच बी कंसेंट्रेशन, जिसको हम एच बी बोलते हैं ना, वो एक्चुअली एच बी कंसेंट्रेशन होती है. वो क्या होता है कि दिस मच ऑफ एच बी हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन एवरी डेसीलीटर ऑफ द ग्राम पर डेसीलीटर में लिखते हैं ना, एवरी डेसीलीटर ऑफ द ब्लड इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. तो एच बी इट सेल्फ डिक्रीजेज ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन, क्योंकि ब्लड अपने आप में तो जो है डाइल्यूट हुआ है ना, हीमोडाइल्यूशन हुआ है. तो ग्राम पर डेसीलीटर की जब हम बात करेंगे तो एच बी कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. सो एच बी सॉरी, जो अनीमिया की डेफिनेशन है वो है प्रेगनेंसी में अगर 11 ग्राम से कम होगा तो ही हम उसे अनीमिया बोलेंगे,
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द HB, और यू कैन से HB एंड ब्लड वॉल्यूम. डू यू गॉट दिस पैरामीटर? कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. HB, sorry, RBCs increase by 20% and plasma increase by 40%. So HB mass increase but hematocrit decrease, HB concentration decrease. That's it. अब अगर थोड़ा सा डीप जाए तो वाई और देयर इज नेचर ने हीमोडाइल्यूशन क्यों किया? क्या होता है, प्रेगनेंसी में सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं एक्सेप्ट 11 एंड 13. ठीक है, आप सबको याद होगा एक्सेप्ट 11 एंड 13 और प्रेगनेंसी फैक्टर इंक्रीजेस. ठीक है, जो सेकंड लाइन है 11 12 13 14 15 वाली लाइन है, उसके फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स हैं 11 और 13. ठीक है, सो ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीजेस एक्सेप्ट 11 एंड 13. ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है. दूसरे फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी में ESR इंक्रीज होता है कि नहीं होता है. प्रेगनेंसी में ESR इंक्रीज होता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट, दैट इज फिब्रिनोजन, इट इंक्रीजेस. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार. इससे मिलते जुलते बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ ये ब्लू वाली जो लाइंस है इनको आप अच्छे से याद करोगे. ऑल क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीजेस एक्सेप्ट 11 and 13. Fibrinogen increases, that is why clotting factor first increases, that is why ESR increases. ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि पेशेंट खुद भी रिपोर्ट करवा के ले आता है कि डॉक्टर साहब हमारा ESR इंक्रीज है, हमें तो कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ये तो TB में इंक्रीज होता है, ये तो इन्फेक्शन में इंक्रीज होता है. सो अगर आपको पता होगा कि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग. एंड सेकेंड चीज़ आपको पता चलेगी कि प्रेगनेंसी इज़ अ हाइपर कोगुलेबल स्टेट. ठीक है, अब हीमोडाइल्यूशन इसीलिए होता है, अगर इतने ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज करेंगे तो फिर क्लॉटिंग होती रहेगी प्रेगनेंसी में, लेकिन क्लॉटिंग नहीं होती ना प्रेगनेंसी में, अपला और इन सिंड्रोम्स में ही होती है, एज सच तो नहीं होती क्लॉटिंग. तो यहाँ पे मैं ये आपको बता रही हूँ हीमोडाइल्यूशन होता है, इसीलिए जो है इतने क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज होने पे भी जो है क्लॉटिंग नहीं होते. गॉट माय पॉइंट? ओके. अब इसके साथ साथ हम 2 पॉइंट्स और याद रखेंगे कि जो है प्रेगनेंसी में WBC इंक्रीज एंड प्लेटलेट्स डिक्रीज. ठीक है, प्रेगनेंसी में WBC इंक्रीज एंड प्लेटलेट्स डिक्रीज. ओके, प्रेगनेंसी में WBC इंक्रीज एंड प्लेटलेट्स डिक्रीज एंड दीज आर डेफिनेटली द नॉर्मल थिंग्स. ठीक है. ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट द ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन. ये देखिए, ये एक पॉलीगॉन में मैंने लिखा हुआ है. नॉर्मली जो है एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है बॉडी में एंड ग्लोबुलिन इज लेस. Okay, normally albumin is more and globulin is less. And what is its ratio? 2:1. What is its ratio? Its ratio is 2:1. 2:1. ठीक है, तो यहाँ आपने याद रखना है कि हाँ देखो, आई नो दैट द रेशियो इज़ 1.7:1, लेकिन मैंने उसको सिंपलर फॉर्म में याद करवाने के लिए इसको 2 बना दिया है. ठीक है, होल राउंड फिगर कर दिया है. ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो 1:1 हो जाता है. अब कोई चीज़ 2:1 होती है तो इसका मतलब क्या है, या तो ग्लोबुलिन बड़ा होगा या एल्ब्यूमिन कम हुआ होगा, तो दोनों ही चीज़ें होती हैं. ठीक है, पहले क्या था, एल्ब्यूमिन ज़्यादा था और जो है ग्लोबुलिन उसका ऑलमोस्ट हाफ होता है. अब वो बराबर हो गए हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन बराबर हो गए हैं. इसका मतलब क्या है कि या तो एल्ब्यूमिन कम हुआ है या ग्लोबुलिन ज़्यादा हुआ है या दोनों, तो दोनों ही होते हैं. ठीक है, बस इतना याद रखोगे. एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का जो रेशियो 2:1 था वो 1:1 हो जाता है. और ये होता है दोनों के इफेक्ट से. ग्लोबुलिन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड albumin also decreases. Okay, so that is what it is happening in the albumin and globulin in the blood. ठीक है, कुछ भी नहीं याद करना, तो सिर्फ इतना याद कर लो कि
हीमोडाइल्यूशन की वजह से जो है ओके, लेट मी टेल यू, क्या याद करना ज़्यादा ज़रूरी है? कुछ भी नहीं याद करना, तो इतना याद रख लो कि हीमोडाइल्यूशन होता है, इसकी वजह से HB कंसंट्रेशन फॉल हो जाती है, और अनीमिया हम 11 ग्राम से कम वालों को ही बोलेंगे। ठीक है, नंबर 1 ये याद रखेंगे। नंबर 2 हम क्लॉटिंग फैक्टर्स याद रखेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज एक्सेप्ट 11 and 13. Fibrinogen increases, that is clotting factor 1 increases, that is why ESR increases. That's it. ठीक है, पूरी स्लाइड अगर आप याद करते हो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं याद करते तो सिर्फ इतना ही याद कर लो। ठीक है, number one thing, because there is hemodilution in pregnancy, so hemoglobin concentration decreases, and the normal definition of anemia in pregnancy is less than 11 gram. First line. Second line, all the clotting factors increase except 11 and 13. Fibrinogen increase, so ESR also increase. ठीक है, that's it. Now let us study about the CVS changes. CVS में क्या क्या चेंजेस आते हैं? अब हमने hematological system, when we studied that hemodilution is occurring in the pregnancy, right? Hemodilution is occurring, blood जो है पतला हो जाता है, उसकी blood viscosity decreases, right? We studied that. So now you tell me, when the blood volume, ब्लड की वेसल्स में ब्लड ज़्यादा हो गया है, तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम थोड़ी सी फिजियो लगाते हैं। ठीक है, क्या फिजियो लगाएंगे? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, सो नाउ यू टेल मी कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। सो अब ब्लड ज़्यादा हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा ही होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और स्टिमुलेशन होता है ब्रेन में, जो है ब्रेन सिस्टम का, तो इसलिए हार्ट रेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में 90s में होता है हार्ट रेट। ठीक है, सो ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं इस फॉर्मूले के, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये तीनों पैरामीटर्स दे इंक्रीज। ओके, सो यू आर not going to forget कि what is this formula, cardiac output is equals to heart rate into stroke volume, each and every parameter increase. Okay, now that was about the cardiac output. Ab now examiners don't let us sleep here. Okay, so now they ask, the more the cardiac output increase, more is the risk of heart failure in the patient of heart diseases in pregnancy. Right? More the cardiac output increase, more is the risk of heart failure in the patient of heart diseases in pregnancy. Right? Now you have to tell me, when is the cardiac output maximum? Cardiac output is maximum at 28 to 32 weeks in antenatal period. So when they ask you when is cardiac output maximum, or when is the heart load maximum, or when is the heart patient is maximum risk of heart failure, it is at 28 to 32 weeks in pregnancy. Now this increase is maximum at 28 to 32 weeks. Now you have not come to know that, but this is only in the antenatal period. The increase in cardiac output is much more in the intrapartum or during the delivery.
and the increase in cardiac output is much more in the postpartum period, that is immediately after delivery. ठीक है. अब आप how you are going to make the concept of this, because you all know during delivery there are lot of contractions, right? So heart has got a lot of load on it, so on delivery it will be more than antenatal. And why it is much more in postpartum? Because all those blood which was being supplied to the fetus, now fetus has come out in the postpartum period, now all those blood get suddenly enter the maternal blood circulation. So due to the sudden entry of the blood into the maternal circulation in the postpartum, there is maximum rise in the cardiac output. Okay, in December FMG 21 it was asked when the cardiac output comes to normal after pregnancy or in the puerperium period. It comes to normal 10 days, 10 दिन बाद वो normal आती है. ठीक है, will you remember it? Okay, so this was about what you have to learn about the cardiac output, stroke volume and pulse rate. उस फॉर्मूले का हर कंपोनेंट इंक्रीज होता है. ओके, नाउ कैपेसिटेंस, अब देखो देयर इज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. ठीक है, अब जो हमारी कैपेसिटेंस वेसल्स होती है ना वो डायलेट हो जाती हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ओके, अब ये जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, मैं अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, लेकिन वो एकोमोडेट कहाँ होगा? अब घर में 2 ही कमरे थे. ठीक है, घर में 2 ही कमरे थे. अगर 3 फैमिलीज आ जाती हैं घर में तो वो कहाँ अकोमोडेट होंगी? ठीक है, सो वैसे ही ब्लड की जो वेसल्स थी उनको डायलेट होना पड़ेगा. और कौन डायलेट होता है? पैथोलॉजी में आप सबने पढ़ा है कैपेसिटेंस वेसल्स, their capacity is to dilate. So capacitance vessels, they dilate under due to the effect of progesterone, and they dilate, so the high rise in the blood volume, the rise in the blood volume is accommodated. ओके, ये हमें समझ में आ गया. अब हमें ये नहीं याद रहता कि बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस ब्लड, बिकॉज इन कैपेसिटेंस वेसल डायलेट, सो देयर इज डिक्रीज इन द पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, या वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. अब ये तो आपको पता है जब कोई चीज़ डायलेट करेगी तो वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, बट हमें याद नहीं रहता. सो आपकी कोई भी सिस्टर, फ्रेंड, वाइफ, कोई भी अगर प्रेग्नेंट हुई हो तो यू मस्ट हैव लिसन्ड एनी टाइम. I'm telling you कि चक्कर आ रहे हैं, सिंकोपल अटैक्स, अभी भी चक्कर आ रहे हैं. सो प्रेग्नेंट लेडीज कीप ऑन कंप्लेनिंग, दिस इज अ यूनिफॉर्म कंप्लेन. अभी भी चक्कर आ रहे हैं. वाई इट इज देयर? बिकॉज द ब्लड प्रेशर हैज डिक्रीज्ड. Okay, syncopal attacks start coming in very early in the pregnancy because the vascular resistance has decreased. So this has a lot of clinical importance. Okay, whenever you will come take any history of any pregnant patient, chakkar aa rahe hain, that is their complaint. So what to do? Why it is that complaint? Because peripheral vascular resistance has decreased, because capacitance vessels have dilated. That is why they are getting the syncopal attacks in early pregnancy. In the later pregnancy, it is these syncopal attacks are only when the pregnant lady lies down. Because suppose it's a pregnant lady, when it lies down, then it the fetus or the uterus compresses the inferior vena cava. This is inferior vena cava. That decreases the return of the blood. So that is why they give a pregnant lady lying down position. They say that whenever a pregnant lady at full term,
lies down, then the pregnant lady gets syncopal attacks. Why it is so? But these syncopal attacks are not there when this pregnant lady sits down or when this pregnant lady takes side, because when a pregnant lady is in a supine position, the uterus or the fetus, it compresses the inferior vena cava and the venous return decreases. That is why there is a syncopal attacks. So in early pregnancy, in the syncopal attacks are due to the decreased vascular resistance, and in late pregnancy the syncopal attacks are only on supine, only in the supine position because of the inferior vena cava compression. Okay, now S1, S2, S3, all these things you better know than me, because you are studying physiology, medicine, all these things. But still, how I make them learn कि S1, S2, S3, ठीक है, बीच वाला नॉर्मल रहेगा, S2 नॉर्मल रहता है, S1 लाउड हो जाता है और S3 सुनना शुरू हो जाता है. ठीक है, S1, S2, S3, S1 loud, S2 normal, S3 heard, and all these findings are normal. ठीक है, there is a, because of the increased blood flow, there is a continuous and systolic murmur which is also perfectly normal. Okay, so once again, what all parameters of CVS increases? The cardiac output increases, the इस formula का हर component increase करता है, cardiac output, heart rate and stroke volume, and जो ये है postpartum period में there is a maximum increase in the cardiac output, and then in the delivery, then in 28 to 32 weeks, peripheral vascular resistance decreases because the capacitance vessels dilate under the effect of progesterone to accommodate the blood volume. S1 is loud, S2 is normal, S3 is heard. Continuous and systolic murmur are perfectly normal in pregnancy because they are due to increased cardiac output or blood volume. Okay, so let's go to the last slide of the physiological changes. There is the respiratory okay, system. Now in respiratory system, you are only going to learn that pregnant lady, because whole of the cavity, the uterine cavity, is filled with fetus, and fetus is so large that pregnant lady has to take deep breathing. ठीक है, pregnant lady has to deep breathing leads to increase more removal of the carbon dioxide from the body, which lead to respiratory alkalosis. Okay, which lead to respiratory alkalosis. Now what all increase is ICTV. I see my TV. ठीक है, so the mnemonic for it is I see TV and movie. So this is the mnemonic. ठीक है, I see TV and movie. If you can't remember the respiratory changes, there are very less chance it will be asked. You just learn the hemat and cardiovascular system, that is sufficient. But if you have time and if you have energy, then please do focus here. I will give you mnemonic here also. I see TV and movie. IC stand for, these are IC, TV and movies, all what increase. Inspiratory capacity increases, tidal volume increases, minute volume increases. Okay, if tidal volume is increasing, then minute volume will increase, that you all know. Okay, and what remain constant is IRB. I stand for inspiratory. What remains constant is IRV. Okay, I stands for inspiratory reserve volume, R stand for respiratory rate, and V stand for vital capacity. So you only have to learn these two mnemonic. What factors increase? Don't forget ICTV movie is for increase factors, and for constant factor it is IRB. Okay, renal system
when you have to learn about renal system, you just learn, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा. वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू नो फिजियोलॉजी वेरी वेल. तो GFR विल इंक्रीज, GFR इंक्रीज होगा तो यूरिया, क्रेटेनिन और यूरिक एसिड का क्लियरेंस ज़्यादा होगा, क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो ये यूरिन में ज़्यादा पाए जाएंगे और ब्लड में कम हो जाएंगे. दैट्स इट. Once again I will revise of renal system. Renal system, in renal system there is increase in renal blood flow, so there is increase in GFR. Increase in GFR lead to increased clearance of urea, uric acid and creatinine. Because there is increased clearance, ये बॉडी से ज़्यादा निकलेंगे तो यूरिन में ज़्यादा होंगे, यूरिन में ज़्यादा होंगे और ये ब्लड में कम होंगे. Okay, that's all about all the factors. Once again, I would like to tell you the changes in the hematological system. Number one, there is hemodilution. Due to that, HB concentration decreases. HB decreases less than 11 gram per deciliter. All the clotting factors increases except 11 and 13. Fibrinogen increases, so ESR increases. WBC increases and platelets decreases. Albumin globulin ratio, it gets reversed. Right? And what about the next? Cardiovascular system. All the formula of all the components of the formula cardiac output is equal to heart rate and stroke volume increases. Peripheral vascular resistance or vascular resistance decreases because there is dilatation of capacitance vessels to accommodate the blood vessels under the effect of the progesterone. Okay, S1 is loud, S2 is normal, S3 is heard, बीच वाला normal है, आजू बाजू वाले सारे infected है, continuous and systolic murmur are perfectly normal. To learn the respiratory system, you have to learn the mnemonic I, C, TV and movie. All these factors increase. IRV, that is inspiratory rhythm volume, and respiratory rate and tidal volume. All this, vital capacity, tidal volume increase hota hai, vital capacity, all this remain constant, rest all things they decrease. Okay, deep breathing leads to increased CO2 removal, leads to respiratory alkalosis. In renal system, there is increased renal blood flow, there is increase in GFR, lead to increase in clearance and decrease in the serum concentration of creatinine, urea and uric acid. That's all for today. Please like, share and subscribe my channel to help me in my teaching journey. Thank you.